Announce- check, check. Announcing the arrival of our chief guest. Ladies and gentlemen, a big, warm round of applause to Shri Prahlad Joshi ji, Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs. Let's give him a thunderous round of applause. And of course, accompanied by our dignitaries on stage. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, right now, we're heading towards our next segment. We're talking about our session, which is highlighting our topic. The Indian CE industry, which is fully committed to developing a sustainable, modern, agile, resilient, and tech-enabled infrastructure to support the government's economic development programs in a sustainable manner. As you would be aware, various green initiatives are underway in the key end-use sectors, with coal continuing to account for the dominant share in the country's energy mix and the critical role of energy in the nation's infrastructure development. It has become imperative for the CE industry to actively support the needs of the coal and mining sector by meeting its requirement for the new age and green machines. Well, ladies and gentlemen, on that note, first up, it's my honor for the welcome address to call upon the past President ICMA and the Managing Director Tata Hitachi Construction Machinery Company Private Limited, Mr. Sandeep Singh. Good evening, namaskar. Thank you very much, Joshi ji. On behalf of ICMA and Indian construction equipment industry, it is my honor to welcome Honorable Minister for Coal, Mines and Parliament Affairs, Shri Prahlad Joshi ji, as our esteemed chief guest at the ICMA Annual Session 2023. I have my personal experience with Joshi ji because our plant is at Dharwad and I meet him many times over there. He has been always very supportive, cooperative, not only for our plant, but with the industry always. He always keeps asking, how is mining doing? Is there any way we can improve that? What are the challenges you people are facing? How we can support the industry? So really honored to have him here. Thank you very much, sir. Thank you very much for yours. Mining is one of the major end-user sector for the Indian construction equipment industry and holds immense importance for us. We are keen to hear the government future plans for the mining sector in India, including coal, and also would like to have his suggestions on how the construction equipment industry can deepen its engagement with the sector and partner with the government to serve the equipment needs of the sector better. Under your leadership, sir, the mining and coal sector has witnessed phenomenal progress over the past years. I would like to mention about the coal production trend in the country, which has been a quantum jump over the last couple of years. The coal production in the country witnessed an increase from 778 million tons in 2021-22 to close to 900 million tons, and they have much bigger target. In fact, our import from the other parts of the world has already come down. Similarly, iron ore production went up from 205 million tons in 2020-21 to 258 million tons in 2020-23. And they have taken many positive steps in strengthening mineral security in country in view of high input cost. This together with enhanced focus of the government on infrastructure has helped the overall construction equipment sales to surpass the 1 lakh mark in the last financial year. For the first time in the history by recording a growth of 26% in the last financial year. Thank you very much, sir. And mining has played very important role in that. On behalf of Indian construction equipment industry, we want to assure you of our strong support and pledge to contribute our level best towards fulfilling your aspirations and advancing the mining sector through cutting-edge technologies, eco-friendly solutions, and continuous improvement in our offerings. This would also boost the demand for our equipments and help construction equipment industry to increase production and availability of these machines in the domestic market. The construction equipment industry is also striving towards further
strengthening the government agenda of promoting Atmanirbhar Bharat through enhancing the industry localization level, and looks forward to increasing the supply of locally produced machine to the end user industry, including the mining sector. As an encouragement to the industry, the government may consider, which we would like to request him, which we have already talked to him, in incentivizing the use of such machine through introducing criteria mandating the usage of machine with at least 10 to 20% localization level for the mining sector. The government support and encouragement is critical to enable the construction equipment industry to emerge as a strong contender in the global construction equipment market. We are looking at to be number second, sir, in the next 5 to 7 years, so we would need a lot of support. We are working on Atmanirbharta agenda very, very strongly. All the manufacturers, first they localize the machine before introducing in the country, especially the machines which are with advanced technology. With these words, I would like to once again thank Prahlad Joshi ji for his kind presence here with us. I'm sure my industry colleagues are eagerly waiting to listen to your address and future plans that the government has for the mining and coal sector, and your advice for the construction equipment industry for facilitating this growth. I now welcome my colleague Arvind Garg to give a brief overview of Indian construction equipment industry. Thank you very much. We would like to be brief in our presentation so that we can give you more time to share your views with us. Thank you very much. Sure. Thank you. Ladies and gentlemen, a big, big round of applause. And welcome, Mr. Garg. So, good evening, ladies and gentlemen. It's really an honor for us to have Honorable Minister Shri Prahlad Joshi ji with us today. We as ICMA, sir, have been engaged with the construction equipment, but as Sandeep ji rightly said, mining is playing a very vital role in the development of our industry. And as we look forward to reaching a stage where we become the second largest market for construction and mining equipment in the world, I am sure that mining equipment will continue to play a very dominant role in this. And your presence here, sir, gives us the confidence that we are in the right hands and that the industry is in the right hands and that we will be able to move ahead. A very brief presentation on how the construction equipment industry is shaping up and how the Indian construction equipment industry is helping the government, partnering with the government in building India's tomorrow. So a very, very brief presentation. So the Indian industry, as you know, is contributing significantly to infrastructure development with world-class technology. And I must say here that we are very thankful to the government that almost 3.3% of the GDP during the current year will be spent on building and strengthening infrastructure. And from our side, we are doing our best to ensure that we have contemporary equipment which helps in cost-effective execution of projects. To give you a very brief today we have almost 115 members who are part of the industry, and we represent the earth-moving equipment machinery manufacturers, road construction equipment manufacturers, mineral handling equipment, and concreting equipment, mineral processing equipment, and of course, the mining machinery manufacturers. So we have in our range hydraulic excavators, wheel loaders, backhoe loaders, dump trucks, screeners, crushers, to say a few, compactors, pavers, milling machines. And all this is really helping transform the industry. Similarly, we have pick and carry cranes, mobile all-terrain cranes, crawler cranes, truck cranes, telehandlers, etc. Batching plants, concrete mixers, and concrete pumps are another set of equipment that we represent. And if you look at the construction equipment end-use sectors, almost 35 to 45% goes towards building roads, but very significantly,
20 to 30% of our equipment goes for mining and quarrying. 10 to 20% goes into urban infrastructure, 5 to 15% into industrial infrastructure, and the balance is others. So mining is a very, very important segment for the construction and mining equipment manufacturers, all of us who are sitting in this room. If you look at the industry performance, I'm very happy to share with you that in the last 9 or 10 years, despite the fact that there was COVID, which led to a shrinkage of the industry, still, over the last 10 years, our industry has grown from what it was, from 50,000 machine sales in FY14 to 107,000 machines, 107,000 machines in FY23. And you will see that except the years where we were afflicted by COVID, generally the industry has been growing at a very good pace. We are today, as Mr. Sandeep Singh said, the third largest supplier of equipment, the largest demand in the world. We are the globally number 3 today, the market. And we expect that in the next 5 to 7 years, we will emerge as the number 2 in the world after China. If you look at the present status of the industry, we are an $8.5 billion industry turnover. And very importantly, we impact the lives of more than 3 million people directly. Because if we sell 1 lakh machines a year, and if the life of the machine is about 9 to 10 years, you can imagine that the operators and mechanics who are directly employed by the industry are about 30 lakh. And if you look at the family members and the secondary and tertiary impact that we have, I think as an industry, we impact a lot of people and we bring a lot of benefit to a lot of people. Similarly, for the MSME sector, and if you look at the number of OEMs, we are about 50 plus. If you look at the future growth drivers, we look at roads and highways, again, as an important driver because a lot of spend is taking place in that area. But equally importantly, we see mining and quarrying as a very big driver of our industry, besides the others that I have listed out there. We have actually developed an industry vision plan 2030 in keeping with the government of India's desire and ambition to grow rapidly. And our ambition is, as an industry, that we must grow at least 3 times its current size and become the second largest CE market globally. And in that, you will also see that we are looking at having a direct impact on at least 60 lakh people and at least reach a size of US $3 billion in exports, both of which are, I would say, outcomes which are in line with the government of India's direction. We are today the most, I would say, credible voice of the industry because we have more than 115 members. And we have a lot of panels which are in manufacturing, which is on technology and sustainability, financial ecosystem, strategic partnerships, branding of our industry, industry data analysis, and sustained demand creation, etc., all of which come together in a holistic manner to ensure that as an industry, we are able to reach out to the government, understand from you the plans that you have, and work in the direction that you set for the industry and for the nation. As I mentioned to you, we are today almost 115 members. The who's who of industry is represented by our association, sir. And we are extremely, extremely thankful to you that you are here today to motivate us, to encourage us, and your presence. We're extremely grateful to you, sir, for being here. Thank you very, very much. Thank you so much. Ladies and gentlemen, once again, a big, big round of applause for Mr. Garg for giving an entire brief on not just the Indian CE industry, but of course, highlighting on ICMA as well. Well, ladies and gentlemen,
the moment we've been all waiting for. It is time for us to now call upon the Minister of Coal, Mines and Parliamentary Affairs, Government of India, our chief guest, Mr. Prahlad Joshi, for his address. Shri Krishnan, President ICEMA, Shri Sandeep Singh, past President, Shri Arvind Garg, past President, and Ms. Seema Gupta, and all other manufacturers and representatives of the manufacturers who are present here. Ladies and gentlemen, मैं पहुंचते पहुंचते थोड़ा देरी हुआ है, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं पार्लियामेंट चल रहा है। कोल और माइन के साथ मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री भी हूं, तो मैंने ये सोचा कि आपको कमिटमेंट किया है, इसीलिए अभी भी हमारा, जब मैं निकल रहा था राज्यसभा, अभी भी चल रहा है हमारा, तो बहुत ही टेंशन में भी चला रहे हैं क्योंकि तो हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मित्र चर्चा करना चाहते हैं, ऐसे बाहर बोलते हैं, लेकिन चर्चा करना हम नहीं दे रहे हैं। तो इस बीच में आप सब जानते हो, दिस इज द ऑलमोस्ट लास्ट बट वन सेशन, नेक्स्ट सेशन विल बी द ऑलमोस्ट लास्ट सेशन। इससे पहले जो कुछ भी हमको रिफॉर्म्स लाना है, that we need to complete, and I assure you, whether it is this session or next session, जो कुछ भी भारत की इंडस्ट्री के और भारत के जनता के हित में है, ऐसे पूरे काम हम करके ही चुनाव में जाएंगे, ये तो मैं आपको पहले आश्वस्त करता हूँ। ICMA has a legacy of over 70 years, and association represents over 100 leading companies handling the equipment that are used in the Indian infrastructure sector. As you know that we are in Amrit Kal, our PM Shri Narendra Modi ji has given us a vision of transform India into a developed country by 2047, when nation celebrates the 100 years of independence. मैं आपने तो एक प्रेजेंटेशन दिखाया है, मैं तो आपको एक आह्वान करता हूँ, 2047 में देश कैसे रहना चाहिए, एक प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को, हम सब मंत्रियों को एक विजन दिया है और उसका एक प्रेजेंटेशन भी है। आप लॉजिस्टिक्स क्या होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट क्या होना चाहिए, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रोड कैसा होना चाहिए, पोर्ट कैसे होना चाहिए, एयरपोर्ट कैसे होना चाहिए, ये सब के बारे में एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और आप लोगों का जो उपयोगी होता है, ऐसे एक प्रेजेंटेशन है। एक बार देख लो, आपका भी विजन थोड़ा और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बिकॉज नाउ आवर व्हाट वी आर थिंकिंग इज, तो लास्ट टाइम हम 1 लाख से ज़्यादा मशीन सेल किया। जो अभी जो मोदी जी का सोच है, अगर आपके सोच से चलते हैं तो आप बहुत जल्दी ही इससे दुगना त्रिगुना और ज़्यादा ही 10 गुना आप हो सकते हैं, ऐसा हमारा सोच है। एंड दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम पोस्ट कोविड एंड ड्यूरिंग द वॉर, if at all one country is investing more than 10 lakh crores in the infrastructure, that is only and only is India. ये सिर्फ और सिर्फ भारत है। आप सब, you all know roads in a big way, we are constructing the roads, and airport हमारा था 70 एयरपोर्ट्स था 60 years में, 9 बरस में हमारा एयरपोर्ट 140-145 तक पहुंच गए हैं। रोड का रोजाना हम 37 किलोमीटर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
और एज फार एज माइनिंग एंड कोल इज कंसर्न, आप तो अच्छे तरह से जानते हैं क्योंकि कितना हम कर रहे हैं। अब तो इसके लिए आपका सहयोग और आपका योगदान, बिना आपके योगदान ये हो नहीं सकते हैं। तो जब हम एमएमडीआर बिल लाए थे लास्ट 2021 में, तो जो लोग विरोध करने के लिए, कुछ लोग हैं इस देश में, तो ये रेड फ्लैग लेके खड़े हो जाते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड दी कमर्शियल कोल माइनिंग, देन ऑल्सो देयर वाज अपोजिशन। हम एमडीओ कंसेप्ट लाया था, तब भी अपोजिशन हुआ था। लेकिन आप देख सकते हो इन 2014-15 the coal production in this country was $566 million, sorry, 556 million ton. And this year, for the first time in the history, we are going to surpass the 1 billion tons of the coal. ये सस्टेनेबल मैनर में हमारा जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट दुनिया के लिए है, वो भी देखते हुए हमको कोल गैसिफिकेशन में भी हम सोच रहे हैं, नेट जीरो पे भी हम सोच रहे हैं, बट लेकिन हमारा एनर्जी सस्टेनेबिलिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Because as you know all well, if at all some country is becoming the destination of the world for the manufacturing, that is India today. तो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दुनिया के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो when the people are ready to invest in country, so we need to facilitate, and हमारा गवर्नमेंट माननीय मोदी जी का नेतृत्व में सोच ये है कि तो जो लोग इंडस्ट्री और बिजनेस चला रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में देश का जो हमारा आगे लेके जाना है, देश के हित में जो काम करने वाला है, उसमें इंडस्ट्री और बिजनेस में हमारा स्पष्ट सोच है। पहले क्या होता था, तो इंडस्ट्री के बारे में अच्छे दो शब्द बोलते हैं, तो बिजनेस करने वाले के बारे में ऐसे होते हैं तो हमको कैपिटलिस्ट बोलते थे, और पूरा हम गरीबी और गरीब का विरोध ऐसे एक ब्रांडिंग कर देते। लेकिन इस गवर्नमेंट का सोच अलग है। वी वांट दैट इंडस्ट्री शुड ग्रो, दे शुड डू वेल, बिजनेस शुड ग्रो, दे शुड डू वेल। By that reasonably we should get the revenue and we should serve it to for the purpose of the poor people. This is the clear cut thinking of our government. तो इसीलिए जो हमने बदलाव ला रहे हैं, उस बदलाव में जहाँ तक कोयला और अदर माइनिंग का क्षेत्र है, कोयला तो हम अभी टोटल 85 कोल ब्लॉक्स हमने आवंटन किया है थ्रू कमर्शियल कोल माइनिंग, एंड दिस ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम कमर्शियल कोल माइनिंग के थ्रू 8 मिलियन टन 21 में शुरू हुआ है। दिस इज नॉट, आई एम नॉट टेलिंग 10 बरस पहले होता, ऐसा नहीं है। 21 में शुरू होता, ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन टन इस बार लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन हुआ है थ्रू कमर्शियल कोल माइनिंग। दिस ईयर आई थिंक इट विल बी मोर देन 10-12 मिलियन, आई थिंक इट मे गो अप टू 15 मिलियन टन। So these are all the things which have been, I mean, we are trying to bring, and कल भी हमने एक बिल पेश किया परसों about MMDR Act, where it provides, but we have also जो हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल का तो सब लिथियम वगैरह जो है क्रिटिकल मिनरल के लिस्ट में डाल के रखे थे, तो सॉरी एटॉमिक मिनरल्स के लिस्ट में डाल के रखे थे। By that we are not able to mine it, we are not able to explore it, but हमने वो भी चेंज करके अभी 6 जो एटॉमिक मिनरल्स थे that we have brought in the we have removed from the minerals, I mean atomic minerals list, and other critical minerals also, some of the critical minerals. Now the exploration license also we are giving, and we are creating the concept of junior miners, which राज्यसभा में पेंडिंग है। इस सप्ताह में हम पारित करेंगे, 1 महीने में इसका रूल भी बना के हम इसमें भी जो एक्सप्लोरेशन के लिए और क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए, डीप सीटेड मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए हमने बड़ी मात्रा में एक बदलाव ला रहे हैं, और इसमें भी आपका इक्विपमेंट बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाला है। और इसमें भी मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ,
एज फार एज पॉसिबल जो कुछ भी हमारे भूगर्भ में है, हम बोलते हैं रत्नगर्भा वसुंधरा, जो हमारे देश में है, हमारे पास कोयला है। मुझे एक बार प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं कोयला मंत्री बना, प्रधानमंत्री ने मुझे पूछा, आप कोयले के बारे में कुछ जानते हो? मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर, अगर कोयला जलाता है तो बिजली आता है, इतना ही मैं जानता हूँ और कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे मैंने कहा, एंड दैट वाज अ फैक्ट ऑल्सो, आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट। एंड प्राइम मिनिस्टर सेड इट्स ए गुड थिंग। मैंने बोला आपका मार्गदर्शन क्या है? प्रधानमंत्री जी ने एक ही चीज़ बोला था मुझे, एंड आई टुक इट एज मंत्रा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोल सेक्टर। ही सेड, देखो अगर हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, मान भी सकता हूँ, टॉलरेट भी कर सकता हूँ। अगर कोल इंपोर्ट करते हैं तो ये देश के लिए हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वी आर कमिटिंग ए सिन टुवर्ड्स द कंट्री। तो वही सोच हमारा है, इसीलिए हमारा बहुत ही स्पष्ट सोच है, बाय 25-26 ऑल सब्स्टिट्यूटेबल कोल import should be totally stopped, and we are going to stop it. That in that direction we are heading. तो इसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है, इसका अहम भूमिका है। एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ चल रहा है। आपने ITPA शायद आपने सब देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये तो वही कर सकते थे आप, इससे बेहतर है, बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया व्यवस्था और इतना बढ़िया एक जगह पे सब कुछ अगर कर सकते हैं तो 20,000 लोग, 20,000 पीपल कैन असेंबल एंड डू देयर एक्टिविटी सीमलेसली। एकदम छोटा है, 15, 20, 25 लोगों का भी करने का हॉल है, 7,000 लोग बैठने का भी एक हॉल है, और इसके साथ ही साथ सब कनेक्टेड है, सभी व्यवस्था मजबूत है। ये तो दुनिया, इट इज़ रियली समटाइम वी पीपल से वर्ल्ड क्लास, बट वर्ल्ड क्लास क्या है हमको भी पता नहीं रहता। जो पॉलिसी मेकर से कभी कभी आपको भी पता नहीं रहता, हम वर्ल्ड क्लास बोल देते हैं, लेकिन ये रियली वर्ल्ड क्लास हुआ है। एक बार देख लीजिए, सब मीटिंग इसके बाद उधर करिए, इससे बहुत बहुत ही बेहतर है जी। और कंपेरेटिवली आई थिंक इट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो। आई डोंट नो द प्राइस ऑफ, आई मीन वॉट एवर दे आर चार्जिंग नाउ। सो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में देश में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और हम जो इसमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पोर्ट और एयरपोर्ट में काम हमारा बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। और मैं एक चीज़ आपके ध्यान में लाता हूँ, तो आपको भी कभी कभी आपको लगेगा ये मैं ठीक बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा है, ऐसे सोच में आएगा। लेकिन जो कुछ भी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दी रेलवे लाइन हुआ था, उसमें जब हम लिए थे, मोदी जी के नेतृत्व में हम सत्ता को संभालना शुरू किया, at that time it was around 20,000 kilometer electrification was done. So now it is 62,000 kilometer of electrification in the last 9 years. This is the change we are trying to bring, and for that, once if you total electrification जब होना शुरू होता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, तब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर मीन्स आई एम टॉकिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो पॉलिटिकल पावर हमारे पास ही रहेगा, नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास ही रहेगा, उसमें चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिकल पावर हमारे, लेकिन आपके लिए जो पावर चाहिए वो पावर हम, अगर देखो एक बार इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो कितनी बड़ी मात्रा में हमको पावर चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी बड़ी मात्रा में हमको पावर चाहिए। फॉर दैट वी नीड कोल। उसमें कोल गैसिफिकेशन, सस्टेनेबिलिटी कैसा करना, वो भी हम बहुत, वी आर वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो, उसमें कोई शक नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट दिया है, वी आर कमिटेड टू दैट। बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड, बाय 2030 द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी डबल्ड। सो इवन इफ यू कंसिडर with the wind and solar, with all these also,
if we can get 50% of the power also, remaining 50%, we need to go on thermal. At that time, we need coal. And हमारा इस लेवल पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आगे जा रहा है तो ऊपर लेके जा रहे हैं हम, for that we need steel. Many things are needed. So for that, the manufacturing equipment plays an important role. And हमारा thirst है कि make in India, because our country, you know, it is 140 crores country. For that we need to create employment. तो इसीलिए हमने बहुत ही बदलाव लाया है. नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट हमने क्रिएट किया है. एंड ऑल्सो यू नो दैट आफ्टर 2021 अमेंडमेंट 161 मिनरल ब्लॉक्स हैव बीन ऑक्शन्ड इन द कंट्री. आप लोग सब मिलके जो माइन लिया है, आप जो मैन्युफैक्चरर्स है, सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस करना, दबाव डालना, जो कुछ भी करना है करो, क्योंकि हमारे तरफ से हमने जो कुछ भी करना था कर दिया है. कई स्टेट में और भी ज़्यादा करने के लिए, मीन्स अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो इक्वली इन्वॉल्व, कोऑपरेट. जिस स्टेट ने किया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है. इफ आई कैन टेल यू, बिफोर वी कुड bring this amendment in 2021 and 2015 जो ऑक्शन रिजीम हमने शुरू किया, उससे पहले ओडिशा का तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द माइनिंग वाज अराउंड 5,000 crores. From 2000 to 2015 to 2016 to 2019, after bringing the first amendment in 2015, the revenue of the Odisha was around 25,000 crores. And 21 में जो हमने बदलाव लाया कोल सेक्टर में और माइनिंग सेक्टर में, उसके बाद ओडिशा का रेवेन्यू हो गया है 50,000 crores. It is 50,000 crores. And these are the changes which are visible. मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. Some states are, in spite of the political differences, some state, ओडिशा इज बीजेपी का गवर्नमेंट है, बट दे हैव डन वेल. मध्य प्रदेश अच्छा किया है, कर्नाटक अच्छा किया है. तो हमने एक्सप्लोरेशन नॉर्म्स वेर ऑल्सो रिलैक्स्ड. पहले क्या होता था, G2 लेवल पर लाने तक थक जाते थे, इसलिए हमने जो सरफेशियल मिनरल्स है उसके लिए हम G3 लेवल पर हम अभी माइनिंग लाइसेंस दे रहे हैं. G4 लेवल पर कंपोजिट लाइसेंस का व्यवस्था हमने की है. एंड और एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे बोलना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एक तो दो चीज़ सब मंत्रियों को हमेशा बोलते हैं, एक तो कंप्लायंस कम करो, बिलीव आवर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिलीव आवर पीपल एट लार्ज. तो इसलिए कंप्लायंस कम करो, तो कंप्लायंस बहुत कम किया है. एंड टोटल मिनरल सेक्टर में हमने we have decriminalized 49 rules in the mineral concession rules and 24 rules in the mineral conservation and development rules. So हमने इसका decriminalize करके, और आपका हमारा जो इलीगल माइनिंग का भी एक बहुत ही बड़ा इशू था, इसलिए हमारे देश में माइनिंग नहीं होता था, तो वो भी हमने decriminalize कर दिया है. और जो एक्चुअली इलीगल माइनिंग करते हैं उसके तो कार्रवाई होगा, उसमें प्रावधान है. लेकिन जो कुछ भी करते हैं, अगर आप जब माइनिंग करते करते आप मोटर व्हीकल एक्ट का भी अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो भी इलीगल माइनिंग हो जाता था. ये सब हमने एकदम ठीक ठाक कर दिया है, सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वी आर डूइंग. एंड आई डू नॉट वांट टू टेक मच टाइम ऑफ yours, because I think from morning till now you might have listened to so many speeches, or you may be also feeling that ये तो भाषण वही हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ. लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, हमारा जो कोल PSUs है, कोल PSUs दे हैव डिसाइडेड ऑलरेडी. हम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. आई थिंक मोर देन 66,000 crores वी आर इन्वेस्टिंग. एंड इसी के साथ ही साथ the coal PSU have made an investment plan of 2.5 lakh crore by 2030 in the new business, like renewable home, or we are now in the some state governments, because हमारे देश में एक तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने जो गलती किया था, वो तो
एक तो कोयला हमारा इस पश्चिम क्षेत्र में है और हमारा थर्मल पावर जनरेटिंग प्लांट्स है दक्षिण में, कई कई जगह में है। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। दिस पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ वाज अ बिग प्रॉब्लम। नाउ आवर कोल कंपनीज ऑल्सो MOU किया गया है कई राज्यों के साथ कि पिटहेड पावर प्लांट लगाने का हमने डिसीजन ले लिया है। सो दैट पिटहेड पावर प्लांट से जो फॉर एग्जांपल आसाम है, आसाम से कोयला उधर तो वो मार्गरेट में थोड़ी छोटी मात्रा में कोयला है, लेकिन हम पिटहेड पावर प्लांट असम सरकार के साथ हमारा एक MOU हो रहा है, मध्य प्रदेश के सरकार के साथ एक MOU है CIL का, तो उसमें भी हमको कोयला चाहिए। वो भी कोयला उत्पादन ज़्यादा करने के लिए हमने डिसाइड किया है और वो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल 2.5 लाख करोड़ बाय 2030 वी आर इन्वेस्टिंग एंड minerals such as iron, limestone, gypsum, bauxite, cauge, chromite, etc. are crucial for the construction company, and for that also we have changed the policy. I would not like to elaborate it now. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, by 2047, अभी तो हम 2014 में we fragile 5 के लिस्ट में थे as far as economy is concerned. Now we are the 5th largest economy. The Prime Minister has committed in public and recently भी उन्होंने कहा है, आपने सुना होगा, तो India will be the our third term, India will be the third largest economy of the world. Will be the third largest economy. And by 2047 India एक डेवलप्ड कंट्री होगा, विकसित राज्य होगा मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए बहुत ही बड़ी इन ए बिग वे वी हैव गॉट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी के लिए भारत सरकार जो कुछ भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको करना है हम करेंगे। तो आप भी इक्विप्ड हो जाओ, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चर आप यू ट्राई टू बी इक्विप्ड, क्योंकि देश अभी आगे देयर इज यू बी रेस्ट एश्योर्ड इंडिया डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं और इसके साथ ही साथ हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी होने जा रहा है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए जो कुछ भी व्यवस्था खड़ी करना है उसके लिए आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाला भी है और यू विल बी ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम। So you need to equip yourself. With these words, I wish you all the best. Thank you. धन्यवाद. नमस्कार. Ladies and gentlemen, let the applause continue. Definitely our chief guest, who's truly shaping India's tomorrow. And we'd like to humbly thank him. Well, we don't want to miss on this golden opportunity which is endowed on us today. And we'd like to continue with the interaction with our Honorable Minister, co-moderated by Mr. Sandeep Singh and Mr. Arvind Garg. Of course, we've got our President as well as Secretary General on the stage as well. Mr. Garg, could we have the mic on, please, for Mr. Garg? Please, yep. So, over to you. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बदलाव की बात की, मैंने सोचा आप बदलाव की बात करेंगे। आपने तो बोला कि पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिस तरह से आपने बताया कि देश में एक क्रांति आ रही है और उस क्रांति को आप लोग आगे लेके चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरे इंडस्ट्री के मेंबर्स आपके बहुत बहुत आभारी हैं। वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हु हैज सेट अ विजन। जैसे आपने बोला 2047 का जो विजन है आप लोगों का, तो उसके लिए हम लोग आपके भागीदार हैं सर। एंड आपको हम लोग इस बात के भी बहुत आभारी हैं कि आप लोग हमको अपना इंडस्ट्री को अपना एक तरह से एक फैसिलिटेट करने की बात की आपने बोला कि हम आपको वी सी यू एज पार्टनर्स इन प्रोग्रेस। आई थिंक दैट इज़ वेरी 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 हार्टनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच सर। एज इंडिया चेंजेस, जैसे आपका जो विजन है कि पूरा देश को बदलना है, तो हम लोगों का ये भी है कि जो माइनिंग प्रैक्टिसेस हैं इंडिया में, उसमें आप लोग क्या बदलाव लाना चाहते हैं सर? आज बहुत छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ कि
आज भी हमारे जो PSUs हैं जो 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो आज भी मतलब जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस हैं, उनके जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें मुझको लगता है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस आर येट टू रीच। तो आपकी उस बारे में क्या सोच है और क्या बोलना चाहेंगे सर आप? कि एक तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम तो पहले हमने ला चुका है, वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट द ट्रांसपेरेंट सिस्टम, बट एट द सेम टाइम तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो कितना भी बोलते हैं तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। मैं डिटेल में जाना रहता। एक तो हमने जो कुछ भी लाइसेंसेस, परमिशंस, ये सब था, ये तो हम ट्रांसफ़र करने का एक व्यवस्था कर दिया है। जो नया एक्ट हमने लाया है उसमें जो ये पहले क्या था, अगर आपका एक माइन है, उसका लीज एक्सपायरी होने के बाद उधर फर्दर इफ़ यू वांट टू ऑक्शन इट एंड देन स्टार्ट द प्रोडक्शन, पूरा 21 लाइसेंसेस, परमिशन, whatever it is was there, all those things were to be, you should go to the state and central government and avail all those clearances, licenses, permission, everything. Now we are just transferring all those things to the next person, whoever wins the auction. So this is a big change. Many such changes we have brought in. मैं आपको एक आश्वस्त करता हूँ, एक तो हम जम पे मैक्सिमम जो हम अभी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं PSU में भी जम के थ्रू कर रहे हैं। वे इसके बावजूद भी आपका कुछ सुझाव है तो हमने जो बदलाव लाया है ये तो पब्लिक डोमेन में है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट दैट दीज थिंग्स is not in favor of the ease of doing business, if it is brought to notice, then it will be immediately attended. So, मंत्री जी, हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। मैं कुछ इंसिडेंट रिलेट करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि जब आपने माइनिंग मिनिस्टर्स टेक ओवर किया तो मेरे को याद है मैं आपको उस समय मिला था आके, और आपने मेरे को बहुत क्लियरली बोला था, मेरे भी इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय, तो आपने बोला था कि मेरे को माइनिंग के बारे में इतना नहीं पता, मैं सीखना चाहता हूँ और आप हमें इनपुट्स दीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस किया जाए। तो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जैसे हम टेंडर प्रोसेस है या हम प्रोडक्शन देखें कोल की, या जैसे हम विज़िट करते हैं, जिस तरह से हमें सुना जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उसका मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। दूसरा, अभी आपने बोला कि नेट ज़ीरो पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि 2070 तक हम ये अचीव करेंगे, जिसमें कोल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योग होगा उसमें, और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी, लो एमिशन प्रोड्यूसिंग मशीन्स का लाना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसका लोकलाइज करना, जो आत्मनिर्भरता में हमें जो वादा किया है, तो उसमें हम चाहेंगे कि आप क्या हमें अपनी गाइडेंस दे सकते हैं और क्या स्टेप्स ले रहे हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर से हमें टेक्नोलॉजी आ जाती है जो इतनी क्वालिटी या लो कॉस्ट में आ जाती है और हमें चैलेंज हो जाता है लोकलाइज करने का। तो क्या विचार हैं आपके, कैसे आप हमें और मोटिवेट करेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट और लेके आएँ इधर? तो आपसे सुनना चाहेंगे उसके बाद। नहीं, एक तो नेट जीरो वगैरह में जो है उसमें तो काम तो चल ही रहा है। जो फॉर एग्जांपल कोल प्रोडक्शन के लिए भी जो हमको बिजली चाहिए, हम वी आर ट्राइंग टू टेक इट फ्रॉम आइदर दिस सोलार, विंड पावर, ये तो हम कर रहे हैं, तो अलग बात है दैट। बट एज फार एज coal mining is concerned or other mining is concerned, तो हम we are trying to first, our thrust is that make in India. We are telling even our MDOs that पहले तो भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसके लिए ही हमको प्राथमिकता देना चाहिए। ये तो हमारा स्पष्ट विजन है। और इसके साथ ही साथ हम जो कुछ भी अभी तक कोयला में किया है, कोयला में जब हम कमर्शियल कोल माइनिंग करने जा रहे थे तब भी विरोध हुआ था। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, नाउ
for the surfacial mineral, whatever the auctions have been taken place. So some people have, of course, it was in the initial stage. तो bid इतना अच्छा गया है, so people are ready to invest. तो इसके लिए हमने भी जो मेक इन इंडिया के इक्विपमेंट्स के लिए हम थ्रस्ट दे रहे हैं, उसमें आप जो बदलाव चाहते हैं, that let me know it, we will definitely try to introduce it. थैंक यू सर। उस मामले में दो चीज़ बोलूँगा सर एज एन इंडस्ट्री। पहला तो हम लोग एक इंडिया में इंडिजिनाइज करने का, हमारे जो मशीन्स जो बनते हैं इंडिया में, उसमें अभी भी इंपोर्ट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, और उसके लिए हमको लार्ज सप्लायर्स को अट्रैक्ट करना है ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में R&D हो। तो उसके लिए हम लोग एक प्रपोजल में काम करने से, विच इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर है, which I am sure it will come to the cabinet and come to your, we will request your support to that proposal when it comes for our industry and when it comes to your, अभी हम लोग नीति आयोग और Ministry of Heavy Industries के थ्रू आ रहे हैं with the proposal, तो आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हमारा सपोर्ट कभी भी रहेगा, आप निश्चिंत रहिए, you be rest assured that our support will be always there. और एक और चीज़ उसमें ये था सर कि सभी माइंस में आज की डेट में सभी ऑपरेटर्स जितने भी हैं, ऑल ऑपरेटर्स मस्ट बी स्किल सर्टिफाइड। ये एक अगर मैंडेट हो जाए, दैट विल ऑल्सो हेल्प अस, बिकॉज पहली बात तो ये है कि सेफ्टी हैज़ टू इंक्रीज, और माइंस को आप जितना ग्रो कर रहे हैं उतना हम लोगों को मैन पावर को भी अट्रैक्ट करना है और ये सेफ ऑपरेशंस करना है। उसके लिए स्किलिंग के ऊपर थोड़ा और अगर एम्फेसिस किया जाए और अगर उसको मैंडेट किया जाए कि ओनली सर्टिफाइड एंड स्किल्ड ऑपरेटर्स विल बी अलाउड, दैट विल बी गुड। इट कैन बी गिवन सम टाइम, थोड़ा वक्त दे के कि इस समय तक हम लोग सभी स्किल ऑपरेटर्स को स्किल करा सकें। नहीं, इसमें तो थोड़ा हमारा काम और तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा कोयला खदान है और माइनिंग का एक्टिविटी चलता है, उधर के जो लोग अनस्किल्ड लोग हैं उनको भी हम, क्योंकि जब हम लैंड एक्वायर करते हैं तो उनका लाइवलीहुड चले जाता है। व्हेन ही लूजेस द लाइवलीहुड, तो उनको तो जॉब वगैरह प्रोवाइड करना पड़ता है जो हम PSUs में कर रहे हैं। तो ऐसे जब स्थिति में इमिडिएटली हम स्किल्ड जो है उनको ही हम एम्प्लॉय करेंगे, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे बट हमको उनको स्किल्ड करने के लिए हमको प्रोग्राम ऑलरेडी भारत सरकार ने ले चुका है। वी हैव टेकन इन ए बिग वे टू upgrade the skills of our unemployed youth, especially in the mining area as far as my department is concerned. But at the same time, we need to employ them as a unskilled labor also. सर, हमने आपके साथ इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा टेंडर प्रोसेस है उसमें बहुत रिफॉर्म लेके आए हैं। L1 क्राइटेरिया है, पर उसमें क्वालिटी का और जो मटेरियल मशीन अप टाइम को भी वेटेज दिया जा रहा है। पर अभी भी सर उसमें कुछ हमें कमियां नज़र आती हैं। रिवर्स ऑक्शन होता है तो उस समय हमें लगता है कि जो क्वालिटी हम जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, जो हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। तो उसके बारे में अगर आप हमारी कुछ मदद कर सकें तो वो बहुत ज़रूरी होगा। आपने जब एज ए एसोसिएशन ऑल्सो and as an individual also, whenever you have met, I have told my officer that first of all the quality, and along with quality, make in India, that should be our thrust. And Prime Minister has also instructed all the department that make in India should be given thrust, and we are doing it. Of course, sometimes जो MDOs रहता है वो लोग अपने कॉस्ट के कारण इसमें they try to get the economically or cheap imported material. उसमें भी मैंने अभी भी एक हमारा मीटिंग हुआ था, I have insisted that अभी आप मेक इन इंडिया के ही इंसिस्ट करना, एंड उसमें भी क्वालिटी का भी एक क्लॉज डालना है। मैंने तो ऑलरेडी PSUs को इंस्ट्रक्शन दे के रखा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा और ज़्यादा बल देने का ज़रूरत है। मैं कराता हूँ। आपका जो स्पेसिफिक अगर आपका कुछ इनपुट है तो इन पर्टिकुलर यू कैन गिव इट टू मी, आई विल गेट इट डन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ बस तो ठीक है। तो सर एक लास्ट रिक्वेस्ट था कि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है या उसके स्पेयर पार्ट्स हैं उस पर आज 18% GST लगती है सर, किंतु सरप्राइजिंगली माइनिंग मशीनरी एज वेल उसके स्पेयर्स पे
28% GST है. And 28% GST is actually for material that is not very useful, that is perhaps luxury. But mining is a very critical component of the development of the country. तो इस बारे में भी अगर आप उसके बारे में कुछ सोच के अगर कुछ स्टडी करवाएं कि क्यों 28% GST लगती है for mining equipment as well as spares, that can bring down the cost of operations and everybody will benefit, sir. Because ultimately government pays for it. So जीएसटी काउंसिल में होता है. मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर के ध्यान में ये लाता हूँ, आप मुझे अधिकृत रूप से एक दे दीजिए. जी सर. बट एट द सेम टाइम मीट सम ऑफ द state finance ministers also, because ultimately it has to be done in the GST council now. As far as central government is concerned, I will bring it to the notice of Honorable Finance Minister. Yes. तो Yes. Over to you, I'm Mr. here Garg. to माननीय मंत्री जी को मतलब निकलना है. उन्होंने समय जैसे उन्होंने बोला राज्यसभा was still there and he came here to keep up his promise and to be with us. Sir, हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं. A big thank you to you, sir, for being here, for motivating us and for sharing with us the vision that you and the government under the Honorable Prime Minister have of transforming the landscape. हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं that you are driving change, and we only want to assure you, sir, that as an industry body and as members of this industry, we are wholeheartedly participating in India's progress. We are benefiting from the progress that India is seeing under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his entire team of ministers who are each a very big change agent. मैं देखता हूं कि बोलते हैं डबल इंजन की गवर्नमेंट है, पर मुझे लगता है कि ये डबल इंजन नहीं मल्टीपल इंजन्स की गवर्नमेंट है, क्योंकि हर जो हमारे मंत्री साहब हैं, every single minister is a powerhouse who's driving change, and we are really very grateful to you and thankful to you for being here. I don't want to take too much time. Would like to thank all the panelists here and all the members. So I would like everyone to please stand up and give our Honorable Minister a standing ovation. Thank you so much. Well, with that, if I may request Mr. Sandeep Singh to firstly present the shawl to our minister. Ladies and gentlemen, let the applause continue. What a momentous occasion this is. If I may request Mr. Garg to present the memento. All right, we have Mr. Krishnan presenting the memento to our honorable guest, our chief guest. And Mr. Garg, if you can help us in felicitating our chief guest. Ladies and gentlemen, Shri Prahlad Joshi ji. And with that, we request all of you to please come together in the front so that we can get a great photo up with our chief guest. And for all the ones who've stood up, let's keep applauding for our chief guest. We request our dignitaries. The Governing Council, the newly appointed, I think we just announced it today, and we'd want you all to please be present on the stage. So with that, yes, all our members, please do join us. We'll give you 10 more seconds. We just request our chief guest. Yes, sir is right in the center. Ladies and gentlemen, a big round of applause. And with that, we thank our chief guest. As he departs, the vision is only growing bigger and stronger. Thank you to our chief guest, Shri Prahlad Joshi ji, for joining us today. With that, ladies and gentlemen, allow us some time. We're getting ready for our final session. And we allow you for some more networking. Let's get to know one another better and just allow us some more time whilst as we get ready for our finale session. Thank you all for joining us.